जनाब नमाज पढ़दा नमाज भुल जाती है, तहज्जुद पढ़दा पहली रकत पढ़ी आ, दूजी रकत मैनू हर शै भुल जाती, उदों आना जा अल्लाह पे आख ਇਹਦਾ खाना खराब कर दे, नाम निशान मिटा दे, इनके खिलाफ मैं और कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन मैनू बहाली मेरा हक सिर्फ लैटर से इंसाफ दिता जाए काफ़ी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये लैटर किन्ने जारी किया है, ये जनाब इसकी तस्दीक कर सकते लैटर के अंदर। मैं हूं हाफिज़ खालिद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं हम वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर अपने नाजरीन को आए दिन कोई ऐसी वीडियो दिखाते हैं जो उनके लिए बहुत हैरत का सबब बनती है। इसी नौइयत का एक आज हम आपको ऐसा एक किस्सा सुनाने वाले हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये जो हमारा नया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर इंसाफ लेना कितना मुश्किल है या नामुमकिन है, ये फ़ैसला आपके ऊपर है। तो आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं जनाब मोहम्मद ارشد जावेद साहब। ये गवर्नमेंट के एक अदारे के अंदर एज ए मुलाजम रहे हैं, बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। इनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, इनको वहाँ से जबरन इस्तीफ़ा लेके क्यों निकाला गया, इनकी क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या जो है ना वो पूरा क्राइटेरिया है, वो आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चाचा जी ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट VTI आरफवाले चों जबरन इस्तीफा लेके जरा ना फारग कर दिता गया, इनकी की वजह सी? सर वजह है कि मैं 24/11/8 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। 24/11/2008 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਐਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜੀ। ਐਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, उसने मेरे खिलाफ 499 झूठा मुकदमा दर्ज कराया जिला पाकपतन के अंदर, जिंदी बना ते मेरी ड्यूटी जनाब 12-12 घंटे बजाय 24-24 घंटे मुबारक तबस्सम करांदा रहा ताकि केसां दी पैरवी बंदा ना कर सके। जबकि तुहाडी जेहड़ी जेनवन ड्यूटी सी 12-12 घंटे सी, मेरे को 24-24 घंटे ड्यूटी कराउंदा रहा। तुहाडे कोले 24 घंटे ड्यूटी केड़ा बंदा लैंदा सी? मुबारक तबस्सम लैंदा रहा जी। उत्थे की सी एज ए? उत्थे एज ए एडमिन दे विच है साडा क्लर्क की बुलाए मुबारक तबस्सम जी, हेड क्लर्क मुबारक तबस्सम जी जी। वो 24-24 घंटे ड्यूटी करांदा रहा ताकि केसां दी पैरवी ना कर सके। जिस तो बाद इन्होंने मेरे तो 12-12 घंटे 24-24 घंटे ही ड्यूटी करांदे रहे ने। ठीक है। मैं इन्होंने मेहनत की सर, मेरी केस दी पैरवी वास्ते मैं जाना होंदा, मेरी ड्यूटी 12-12 घंटे कर दी जाए ताकि मैं पाक आसानी जा सका। तुहाडा केड़ा केस जी ने? मेरे केस जनाब 499 झूठा मुकदमा इन्हें सलीम ने जारी करवाया सी पाकपतन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच, जिंदे च आन के इन्होंने सिर्फ मैंने परेशान करने वास्ते ड्यूटी सख्त कर दी गई मेरी। मैं मेहनत की जनाब, तुसीं हुण शायद ना लो मेरी ड्यूटी 12-12 घंटे कर दो, इन्होंने मेरी 12-12 घंटे ड्यूटी सर नहीं होने दी। 24 घंटे चलन दिता है। आंधी इत्थे इवें चलदा कि इत्थे बदमाशी नहीं चलनी, जो असीं कहांगे ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। मैं उन्हें करता रहा, लेकिन सिर्फ ड्यूटी तब्दीली का कहने की वजह करके मैनू इन्होंने अगले दिन चार्जशीट दी, मेरी नौकरी तो फारग कर दिता गया। नौकरी तो फारग करने की वजह सिर्फ 24 घंटे ड्यूटी चेंज करने का 12-12 घंटे देखिए, जबकि गवर्नमेंट सैलरी 12 घंटे दी दे 12 घंटे की ड्यूटी में 24-24 घंटे लेंदा रहा, हल्फन लेंदा रहा। जिस तो बाद मैंने जनाब इन्हें कर दिता, मैनू मुलाजम तो भजा के फारग कर दिता। राणा सराजुल हक साहब साडे इत्थों दे आरफवाले दे कॉलेज दे वाइस प्रेजिडेंट या प्रेजिडेंट वल्ला राणा सराजुल हक साहब ने उन्हां दी मेहरबानी शफकत उन्हां दी मेरी दयानतदारी नूं मद्देनज़र रखदे होए मैनू इन्हां दोबारा बहाल 15 दिन बाद मैनू बहाली दा दोबारा शरफ हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां ने मैनू उन्हां दी मेहरबानी उन्होंने मैनू जनाब दोबारा बहाल फरमाया। तुहाडे कोलों इस्तीफा जबरन लिया गया, क्यों लिया गया, किन्ने लिया? जनाब वाला मैनू इन्हां टेलीफोन करके बुलाया गया। अच्छा। 18/12/2010 टेलीफोन करके प्रिंसीपल साहब ने बुलाया, ارشد भाई एरिया में अपने अफसर आ रहे, इंक्वायरी अफसर अदारे च आओ। मैं आया तो मैनू इन्होंने कहा जी कोई गलबात नहीं करनी, मैं सारा मामला कवर कर लूँगा। मैं सारा चुप कर गया, मैं बोलिया ही नहीं। अफसर ने सवाल जवाब करते रहे, कपड़ा तू किया, मैं चुप, एप्लीकेशन तू भेजी, मैं चुप। बाद उन्होंने इंक्वायरी सैयद बराज शाह साहब एरिया मैनेजर सौंप दी गई है। अगले रोज़ मैंने फिर बुलाया गया, उन्होंने सारा मामला दसिया है और एरिया मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह हल्फन एरिया मैनेजर नहीं शौकत गार नूं डिस्चार्ज किया 11 अक्तूबर 2011 वाले दिन। वही मेरे को ऑपरेशन अपने इस्तीफा लिखवा रहा, मेरा तबादला, मैं आपका तबादला करता हूँ। मैं जनाब मेरा जुर्म की किया है, मैं तबादला मेरा कर रहा जी, मैं जुर्म सर किया कोई नहीं, उल्टा तबादला पैसे तो नहीं कैश कराए, तबादला तुसीं मेरा कर रहे हो, मैं तबादला नहीं, मैं नहीं जानता। इस तरह करो फिर इस्तीफा लिख दो। मैं जी तुहानूं अगर बच्चों की रोजी कमांदा चंगा नहीं लगता लिखवा लो जो कुछ मेरे को लिखवाना। उधर प्रिंसीपल की धमकियाँ, मैं आपकी जान तो बचानी है ना जी। मैनू तो मरवा दें, किसी इश्तेहारी कह के मरवा दें, जिंदा उन्हें इस तरह भी कर चुके। मैं हुण मुलवस नहीं करना, वो जान तो मारन दी धमकियां प्रिंसीपल ने लाइया, हल्फन लाइया, उन्हें इतराफ कर चुका जी। मैं उन्होंने शामिल नहीं करता, उन्होंने हाल तो कुरान चट लेगा, वो बड़ा कुरान चटदा पिया, उसनूं वो चटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान उनका कख नहीं रहा, उन्हें नाम निशान मिट गया अदारे विचों। फिर जनाब इन्होंने रिटन जलाल उत्थे है मलाजम, उन्होंने कहते को इस्तीफा लिखाया जाए।
ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਨਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਸकी ਨਕਲ लगाओ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਜੀ, ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਦਕਿ ਜੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਗਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ 33 EB ਦੇ ਵਿੱਚ उसने कोई शनाख्त कर सकता, उसने लैटर में दिता, लैटर किन्ने जारी किया। इस तो ज़्यादा मेरे को सबूत कोई नहीं, थब्बा पलंदा सबूतों का जी। अच्छा, जिस दिन चेक कैश होए ने अलहमदुलिल्लाह मैं शाल लीव लैके जा चुकिया जी। प्रिंसीपल साहब को नहीं आए तो मुबारक तबस्सुम साहब को मैं छुट्टी लैके जा चुके हैं और मेरे तो मुद्दा इन्होंने पा दिता। बच्चे ने वेख्या तो बच्चे ने जनाब चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन मेरे को सबूत मौजूद आ। बच्चे ने तलाह की, इन्हें समझे अरशद ने एप्लीकेशन भेजी है। मैं हल्फन कहना ये मैं नहीं लिखी, जिन्हें लिखी साकब दी मेरे को चेक कर सकते जी, सबूत है। इस तो बाद मेरे को सबूत कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? नहीं, मैं हल्फन कहना एक पैरी पैसा अज तक मैनू अख्तियार ही कोई नहीं कराया भी मैंने। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰੀਵਾਲਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨੇ? मेरे खिलाफ जी, मैं दयानतदार बंदा है, दयानतदार इन्होंने भांदा नहीं, मैनू उन्हें फर्क करा दिता। अच्छा, फिर जे अगर मैं गंदा होंदा जनाब इन्हें मैंने फिर बहाल क्यों की? दूसरा जनाब जुर्म इन्होंने किए पैसे चैक कैश बच्चियां दे इन्होंने कराए ने पा दिते मेरे खाते में। हालांकि मैंने पता ही नहीं, मैं उस दिन है ही छुट्टी थे, झूठा इल्जाम ला के मैनू इन्होंने मेरी इंक्वायरी लवाती प्रिंसीपल साहब। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ये जनाब सारे सबूत मेरे कोल मौजूद ने। बैंक दे रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं जनाब, मैं बेगुनाह हाँ। बैंक का रिकॉर्ड चेक कर सकते, मैं बेगुनाह हाँ। हाजिरी रजिस्टर चेक कर सकते, मैं बेगुनाह हाँ। मैं हाजिर ही नहीं, उस दिन है ही शाल लीव लैके जा चुका। फिर मेरे तो इन्होंने करप्शन का पा दिता। और एप्लीकेशन का रह गया सवाल भी, चेयरमैन एप्लीकेशन तू लिखी, मैं हल्फन ये साबित कर सकता बच्चे ने लिखी। मेरा मोबाइल डाटा चेक कर सकते हैं और उनकी बच्चे की हैंड राइटिंग चेक कर, जिन्हें भेजी जिन्हें लिखी मेरे को सबूत बुलाया। मैं गया डायरेक्टर साहब ने पूछा, सारी सबूत उन्होंने विखाए ने। उस कर्मा वाले ने वेख के एक फैसला किया कि तू हकदार है, सच्चा, मैनू नहीं पता तू बंदा दयानतदार है, तेरी एप्लीकेशन मैं कर नहीं सकता, मेरे को अख्तियार नहीं, तेरे महकमे ने करना। उन्होंने जनाब एप्लीकेशन मेरे एरिया मैनेजर साहब ने भेजी है, खान मोहम्मद जोगिया साहब ने, जिन्होंने मैं सारा बजरिया कुरान सारा कुछ समझाया, सारा कुछ विखाया डॉक्यूमेंट। उसके बावजूद मैनू कहन लग्या भी एरिया मैनेजर भी प्रिंसीपल तुन विच प्रिंसीपल मुलव्वस है उन्हें तो क्यों नहीं तुनता? मैं सर उन्हें बजरिया कुरान इतराफ़ कर लिया कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि बंदा दयानतदार है। मेरी कातलाना धमकियां की वजह करके बंदा बेरोजगार हो गया। उसने मेरी इंक्वायरी लवाई, उन्होंने मेरे को इस्तीफा लिखाया। वो कुरान चुक चुका, उन्होंने मैं किमें शामिल कर ला? उन्होंने कुरान चटेगा जिन्हें मैनू बेरोजगार करवाया। और लैटर इसे का ही है जी प्रिंसीपल का, लेकिन कुरान नहीं मानता। वो उसने कुरान के वास्ते पाए, उसने नहीं मन्ने। वो उसने कुरान जामन दिता, उन्हें नहीं मन्निया। आंदा मैं लैटर जारी किया जी सीट से, आ जनाब लैटर की तस्दीक कराई जाए, जे मैं मुजरम हाँ तो मैनू फाहे लाया जाए, जे मैं सच्चा तो मैनू बाली मेरा हक है। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ नहीं जाती, कोई रंजिश नहीं जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? जनाब मैं एप्लीकेशन भेजी, फिर सूबाई मोस्तबाला जनाब की खिदमत भी गई है। उन्होंने माशाअल्लाह इंसाफ मेरा जिन्ना एप्लीकेशन दिता, उन्होंने मेरा प्रोविडेंट फंड मंजूर वास्ते करा के भेजा, मेरा मैंने मिल गया। जिस वे मैं लैन गया, को अल्लाह का नेक बंदा मेरे नाल गया अफसर, मैं ना नहीं लेना चाहता, शो नहीं करना चाहता। उस बंदे ने जांदियां पूछा प्रिंसीपल साहब मैं कुछ नहीं लेना चाहता, बंदे ने जुर्म की किया? उन्हें आख्या जी चुप, मैं जी कुरान पाक मंगवा लो, मेरा जुर्म साहब मैंने फाइल ला दो। उन्हें आख्या नहीं ना कुरान पाक लाया। उन्हें सर मैं वैसे कुरान चुक लेना। रज़ा हालांकि गुज्जर साहब ने बजरिया कुरान पाक इतराफ़ किया भी मैं इस बंदे को कातलाना धमकियां लाइया, बंदा बेरोजगार हो गया। नंबर 2 ये बंदा दयानतदार आ, पल्लों आपके जेबों दो पानी दी छबीलां करके लोगों को अवाम नास बच्चा तलबा पिलांदा सी, बंदा बहुत दयानतदार। लेकिन उनका कुरान चुक्या जनाब मेरे किस पा, जो मैं ही बेरोजगार हो गया। उन्होंने कुरान खाना खराब करेगा। मैं रोज़ा रसूल ते गया, अपनी जात वास्ते कुछ नहीं मंगया। आख्या अल्लाह के प्यारे महबूब इस गुज्जर का सताया, तेरे दरे दौरे तो आया हाजिर गुलाम, इनका खाना खराब कर दे। और उनका हो गया नामो निशान मिटा दे, उनका नामो निशान। मेरा गुनाह की है? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ? मैं जनाब मैंने 8 साल हो गए। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ गुजारा जी मैं रंग रोग करदा, जो मैनू काम लभे। हद तक मैंने रूढ़ी भी चुकनी पै गई किसी जिम्मेदार की। अलहमदुलिल्लाह रिज़्क हलाल वास्ते मैं रूढ़ी भी चुक ली है, हराम का माल नहीं खाता। कोई बच्चा वीडियो जिस वक्त मैं अदारे के अंदर रहा, कोई बच्चा उंगल करके मैंने दस नहीं सके बंदा कमीना या गंदा या कुत्ता किसी किस्म का कोई जुर्म किया, मैं उनका देनदार हाँ। और अलहमद सारे सच्चाई की शहादत देंगे। बच्ची सारियां बेटियां जो मेरिया बेटे देखते होंगे, अलहमदुलिल्लाह सारे बच्चे शहादत देंगे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जरा मेरे खिलाफ शहादत देगा बंदा कर। मैं आदि मजदूरी करके बच्चा पालता पे।
انصاف مل گیا ٹھیک ہے، رب دی عدالت میں انصاف مل جائے گا. میرے کو اتنے پیسے نہیں میں جا کے عدالت 'ਚ کیس کر لواں 50,000 ਲੱਖ جب میں ਦੇਵਾਂ. ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੋ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕੋ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੱਕ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ اللہ پاک میں نے ضرور بحال فرمائے گا. اللہ کوئی ایسا بندہ کوئی افسر دے دے گا جن کو فرشتیاں کا کم لے کے اللہ پاک میں بحال کر دے گا. سچ اگر دنیا تے انصاف نہ ملے تو اللہ دی بارگاہ چ انشاءاللہ سورۃ فرقان تے اللہ پاک نے واضح فرمایا دنیا جس دی حق تلفی کیتی قیامت والے دن اس دی تلفی دا سارا مزالہ کریں گے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے دنیا تے میں انصاف ملے گا. اگر اللہ نیک بندہ کو وج گیا تے رڑی بلا دے گا نہ دیا انصاف میرے کو سارا ثبوت میرے کول ہے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور آج ہم ایک درد بھری داستان لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ یہ محمد ارشد جاوید جن کا نام ہے یہ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ تحصیل عارفوالا کے اندر ایز اے گارڈ رہے ہیں. تقریباً 5 سے 4 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دی ہے. تو ان کے بیان تو آپ نے سن لیے لیکن وہاں کے رہنے والے طالب علم پڑھنے والے طلباء و طالبات ان کے ساتھ بھی ان کا کیا ریلیشن تھا ان کے کیا موقف ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ پورے ثبوت ہم آپ کو دیں گے تاکہ اس نیک انسان کی محنت کا بندہ ہے اس کی جو ثبوت ہے ان کے جو موقف ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کیا یہ سچا ہے اور کیا ادارہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور یہ بندہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب سے اور وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جسے VTI بھی کہتے ہیں ان کے جو حکام بالا ہیں ان سے وہ جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے ثبوت ہیں اور میں 8 سال سے بے روزگار ہوں مجھے انصاف دیا جائے جو میری سیلری بنتی ہے 8 سال کی جو میں نے دھکے کھائے ہیں مجھے جو میرا حق دیا. جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں محمد ارشد جاوید ان کو انصاف کون دے گا؟ انہوں نے تو اپنی ساری رو داد سنا دی ہے مزید ہم آپ کو اس کے ثبوت بھی دیں گے. تو میری بھی دعا ہے کہ کوئی ایسا رحم دل انسان ملے ان کو جو ان کو انصاف دے سکے اور ان کی سیلریز ان کو بحال کروا کے دے سکے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین نعمان سیٹھی کے ساتھ حافظ خالد وائس آف پنجاب ڈسٹرکٹ پاکپتن. السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب. جیسا کہ ہم نے محمد ارشد کا جو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ عارفوالا کے اندر بطور گارڈ تھے تو اس حوالے سے جو ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ محمد ارشد کے بارے میں وہاں کے جو طلباء ہیں طلباء کے جو والدین ہیں ان کا کیا بیان ہے. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਘਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا. باجی آپ وہاں پہ پڑھتے رہے ہیں؟ جی ہم پڑھتے رہے ہیں. تو محمد ارشد وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ تھا آپ ان کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہیں؟ وہ بندہ کیسا تھا؟ لڑکیاں وہاں پڑھتی تھیں آتی تھیں تو آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ بھائی بہت اچھے ہیں بھائی وہاں پہ ہر لڑکیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی طرح سلوک کیا ہے انہوں نے کہ نا ان کروائی سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ساتھ ہی تھا ایک جیسا ہی تھا بالکل ہے نا ان سے پیار سے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے ان پہ اور جو لڑکے ہوتے تھے نا ان کے ساتھ وہاں پہ نا چھوڑ کر ہمیں آتے تھے سڑک تک کوئی لڑکا شرارت نہ. جیسا کہ محمد ارشد سیکیورٹی گارڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی کہانی لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ہم پہنچے ہیں فتنہ اڈہ محمد نگر جو عارفوالا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. چونکہ ہم نے صرف اس بندے کے بارے میں جتنے ثبوت ہیں ان کو جمع کرنا ہے کہ وہ کس حد تک سچائی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں فتنے اڈے سے.
इनकी बेटियां भी उसी कॉलेज के अंदर पढ़ती रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी जी ਇੱਕ ਸੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ, ਇਸ ਇਖਲਾਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ शराफत 'ਤੇ ਬਿਆਨ देंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरिफवाला जो एक अदारा है उसमें काम करने वाला एक मुलाजम जिसका नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद को गवर्नमेंट कॉलेज VTI की तरफ से बरतरफ़ कर दिया गया। वो आपने सारी दास्तान सुनी, लेकिन उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, वो बंदा किस नौइयत का था, उसकी ईमानदारी कैसी थी, वो हम आपको दिखा रहे थे। तो इसी मौजू के ऊपर हमारे साथ एक माजी मौजूद हैं, हम इनके घर पहुंचे हैं। इनकी बच्ची भी उस कॉलेज के अंदर पढ़ती रही है। इनसे पूछते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ गवर्नमेंट वोकेशनल 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ? जी पढ़ती है। ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਸੀ ਉਹ? सिलाई च। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖਦੀ हाँ ਸੀ? जी सिलाई कढ़ाई सीखती ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨमेंट ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ? नहीं बिल्कुल नहीं मिले, ज्यों शुरू तो मिले ही नहीं, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? कोई पैसा नहीं मिलिया। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ? वो गवर्नमेंट उत्थे ही है स्कूल च। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? नहीं सानू पता ही नहीं ओदा। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ जी भाई वो बहुत अच्छा वा, बहुत जिन्नी भी ओदी तारीफ की जाए बहुत कम आ, लेकिन अच्छा इंसान, इरादे दा भी अच्छा, ठीक है। तारीफ तो अल्लाह दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? कोई लैन देन नहीं, जब सानू ही नहीं पता तो उन्होंने भी नहीं पता, ठीक है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ जाए? इंशाल्लाह हाँ करन, ज़रूर करन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ तो रखन। ये VTI कॉलेज में पढ़ती रही हैं, इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाजी ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਰੀਵਾਲਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? जी ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ड्रेस मेकिंग में। ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਡਰੈਸ ਮਕੈਨਿਕ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? नहीं कुछ भी नहीं मिला हमें। ਅੱਛਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? नहीं हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं मिला, हमें पता ही नहीं है। तो आपको कोई चेक बुक वहाँ से मिली हो? नहीं कुछ भी नहीं मिला हमें, उनके पास ही है सब कुछ। तो आप कब फारिग हुई हैं वहाँ से? मैं 2020 में जाती रही हूँ, तो बस तकरीबन 6 माह उन्होंने उधर करवाया हमें, फिर ट्रेनिंग के लिए 2 माह हमें किसी और के घर भेज दिया था। ट्रेनिंग 2 माह किसी और के घर की थी, 8 माह मतलब हमने उधर किया। डिप्लोमा मिल गया आपको? डिप्लोमा मिल गया, पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। जी नाज़रीन आपने सुना इस बहन की बात कि मैं उसी कॉलेज में 2020 यानी कि जो गुज़रा हुआ गुज़श्ता साल है उस साल में वहाँ पे ये ट्रेनी रही हैं ड्रेस मैकेनिक के अंदर, इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया कोई वजीफ़ा मसूल नहीं हुआ। मज़ीद हम इससे आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करें।